Good morning to all. Today, let's continue with our first chapter going to school. Now, next is Vallam. In some parts of Kerala, we use a Vallam, small wooden boat to reach school. केरला के कुछ पार्ट्स में जहाँ बच्चों के लिए कुछ और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है स्कूल जाने के लिए वो वल्लम यूज़ करते हैं। वल्लम एक वुडन स्मॉल बोट है, लकड़ी की बनी हुई बोट जिसमें कि बच्चे स्कूल जाते हैं। So now question is, have you seen any other kind of boats? You can write the answer. I have seen motorboat and paddle boat and houseboats also. Next question is, can you think of other ways by which we can travel on water? So you can write here. There are big boats and ships also. Now the camel cart. We live in the desert. There is sand all around. It gets very hot in the day. We ride in a camel cart to reach school. जो राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे अदर जो हैं वो मीन्स नहीं है ट्रांसपोर्ट के, वहाँ के बच्चों को जो है वो कैमल कार्ट में ही स्कूल जाना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन स्कूल जाने के लिए वो कैमल कार्ट का यूज़ उनको करना ही पड़ता है। So the question is, have you ever sat in a camel cart or horse carriage or tonga? Where did you climb on it yourself or did someone help you? Here you can write yes or no. It's your own wish. And if you are writing yes, then you have to explain who had helped you. Who had helped you. Next question is, how did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class also. This is bullock cart. You ride in our We ride in our bullock cart, going slowly through the green fields. If it is too sunny or raining, we use our umbrellas. In plain areas, the bullock carts are successful. Their students go to school by it. And if there is a sunny day or raining outside, then they use the umbrellas also. Now here are some questions. Do you have bullock carts where you live? The answer may be yes or no. But here in Himachal, this means of transport is not successful because ये हिमाचल जो है वो एक hilly state है. That's why it is not successful here. Does it have a roof? No, it doesn't have a roof. What kind of wheels do they have? They have large wooden wheels. Make a drawing of cart in your notebook and you have to draw this. Next is bicycle ride. We ride our bicycles on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far. But now, groups of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult roads. काफ़ी टाइम पहले तक जो गर्ल्स को था वो इतना जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो अलाउ नहीं करते थे दूर जाना। बहुत दूर जाना पड़ता था स्कूल्स के लिए एंड इट वाज नॉट पॉसिबल दैट टाइम। बट
जब ये बाइसिकल्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो गई, तो गर्ल्स जो थी वो 7-8 के ग्रुप में जो है वो जाना स्टार्ट हुई है स्कूल के लिए। Question is, can you ride a bicycle? If yes, who taught you to ride? Yes, I can ride bicycle and my father taught me to ride it. How many children come on bicycles to your school? About 15 to 20. You can write this the answer. Next is Jugaad water vehicle. Look at our special transport. It sounds fut 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 when it runs. Is it not something special? The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood. Jugaad means improvised arrangement which has to be used because of lack of resources. Do you have such vehicles in your area? No. Next is, what do you call them in your area? You can write here bike van. Would you like to ride in something like this? Why? क्या आप इस पे बैठना पसंद करोगे? क्यों? Yes, for having fun. Can you tell why it is called jugaad? Because it is made up of assembling the parts of different vehicles. That's why it is called jugaad. Children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach school. At some places, it is so thick that even sunlight doesn't pass through. It is very silent there. You can only hear the sounds of different birds and the other creatures. मीन्स जंगल्स इतने हॉरिबल होते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस होता है। अगर आप दिन में भी वहाँ जाओगे तो भी वहाँ अंधेरा नज़र आता है। इतने हॉरिबल जो जंगल्स हैं, वहाँ से बच्चों को जो है स्कूल जाने के लिए क्रॉस होना पड़ता है। सो यू कैन इमेजिन द डिफ़िकल्टी ऑफ द चिल्ड्रन while going to school. Now question is, have you ever been in a thick jungle or any such place? So you can write yes. Moving on the snow. See how we reach school. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. In the northern hills like Himachal Pradesh, some students have to go to school through snow. मीन्स उनको बर्फ़ में विंटर्स में गिरते पड़ते, मतलब किस तरह वो स्कूल पहुंचते होंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट थिंग है। एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल हेयर, लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स है। आप देख सकते हो स्कूल बच्चे जा रहे हैं और वो किस तरह से वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो चल रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन द स्नो। Have you ever seen so much snow? Where? In films or somewhere else? I have seen so much snow in Shimla. Do you think that such places have snow all the time? Why? Yes, maximum time these areas are covered with snow because they are located at great altitude on the height. Now, rocky paths. We live in the mountains.
The paths are rocky and uneven. The children who live in the plains will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. In Uttarakhand, there are rocky paths. And जो यहाँ के बच्चे हैं उनको पथरीले रास्तों पे चलना पड़ता है, चढ़ाई पे के रास्तों पे भी चलना पड़ता है और पत्थर वहाँ पे होते हैं। जो प्लेन्स के जो बच्चे हैं वो उनको यहाँ पे चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये बच्चे इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि इनको ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगती। वो काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी फास्ट वो इनकी चढ़ाई जो है वो चढ़ जाते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? आपसे पूछा गया है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है आपके रास्ते में जब आप स्कूल्स जाते हो। यू कैन राइट नो आई डोंट। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई? आपको कौन सा मंथ अच्छा लगता है? आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं मंथ, लेकिन यू कैन राइट दैट in the month of October, weather is very pleasant and I prefer this month. So today we have covered our first chapter and tomorrow we shall write question answers. So thank you.